Hello students, welcome to Nabankur Digi lessons. Today we are going to study the English English subjects revision exercise first. First exercise, write the antonyms of the following words. Often, win, despair and. Often means अक्सर प्रायः. Seldom means कभी कभी. Win means जीतना. Lose means हारना, खोना. Despair निराशा, होप, आशा. एंड अंत और बिगिन शुरुआत, प्रारंभ. नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन the order in which they appear in a dictionary. Abundance, administrated, attraction, beautiful, ferocious, furnished, perform, pocket. Write what we call them. लिखो हम उन्हें क्या पुकारते हैं. One who sells jewelry, जो आभूषण बेचता है, ज्वेलर. One who treats patients, जो मरीजों की देखभाल करता है, डॉक्टर. One who travels, जो यात्रा करता है, ट्रैवलर, यात्री. Use the following pairs of words in sentence to show the difference in their meaning. नीचे लिखे वाक्यों के जोड़ों को उनके अर्थ के अनुसार वाक्यों में प्रयोग करो. सीन, उच्चारण में ये एक समान है और इनके अर्थ और स्पेलिंग अलग अलग हैं. आई हैव सीन योर ब्रदर, मैंने तुम्हारे भाई को देखा है. सीन, आई सॉ ए ब्यूटीफुल सीन यस्टरडे, मैंने कल बहुत खूबसूरत दृश्य देखा. हियर, सुनना. आई हियर विथ माई ईयर्स, मैं अपने कानों से सुनता हूँ. हियर, यहाँ. प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आइए. थर्ड, सन. सन यानी सूर्य. सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, सूर्य हमें ऊष्मा और प्रकाश देता है. सन, सन यानी पुत्र. माई सन इज 60 years old, मेरा पुत्र 6 वर्ष का है. पिक आउट द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों में से शांत अक्षर छांटें. वेडनेसडे, ओवर, नाइफ, कॉम, साइन. वेडनेसडे में डी, ओवर में एच, नाइफ में के, कॉम में बी, साइन में जी. साइलेंट है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो. वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस? वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज अवर फेल्यूर इनटू विनिंग. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कान्हा किसली? कान्हा किसली इज ए ब्यूटीफुल नेशनल पार्क. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुड कटर? The tiger once gave the woodcutter a set of gold ornaments. The monkey gave him sweet fruits. One day, when he was very hungry, and the snake helped him in coming out of the prison. What was the only pleasure of the miser? Answer: his only pleasure was to see his treasure every day. Question number 5. What is the work of the Soligram Swaraj Mandal? This organization works to regenerate the degraded forest. Question number 6. Why did the miser make a terrible clatter? The miser made a terrible clatter because his treasure was gone. Question number 7. Why was the woodcutter put in prison? The woodcutter was put in the prison because the ornaments which the tiger gave him were the lost ornaments of the queen. So, thinking him to be the thief, he was arrested. Question number 8. When did Kanha National Park come into existence? Kanha National Park came into existence in 1955. Take the correct option. The poem Another Chance tells us to be sad, to make money, never to give up in despair. Answer is never to give up in despair. Question number 2. Where is Kanha Kisli? कान्हा किसली
कहाँ है? आंसर इज मध्य प्रदेश। व्हाट हैपन टू द अनग्रेटफुल ज्वेलर? आभा रहित जौहरी को क्या हुआ? आंसर इज ही फेल्ट अशेम्ड। वह बहुत अधिक शर्मिंदा हुआ। द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान। आंसर इज उत्तराखंड। द माइजर केम टू द होल टू सी हिज hens, coins, treasure pots. Answer is treasure. Rewrite these sentences after changing gender of the nouns. The poetess received the prize from the king. The heroine of the mayor away. Write the comparative and the superlative degrees of the following words. Difficult, more difficult, most difficult. Few, fewer, fewest. निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। मैन सरपेंट कंपाउंड नाउन है, इसमें दोनों शब्दों के प्लूरल बनेंगे। एमी एंड मैन सर्वेंट्स, माउस माइस, डजन डजन्स, टूथ टीथ, ग्लास ग्लासेस, कार्गो कार्गोज। Fill in the blanks with the correct form of the verbs given in the brackets. When they arrived, the party had already begun. The bell had rung before we entered the class. I went for a walk after I had eaten my dinner. The train had left when she arrived. Did you post the letter after you had written it? Mona enjoyed the food as soon as she had tasted it. Tasted के पहले had आएगा, HAD had. Third, I hurried to see him after I had heard the news. Heard के पहले had आएगा, HAD had. Use appropriate articles to fill in the blanks space. Once a tortoise was walking along very slowly. He met a hare. The hare made fun of him. The tortoise said that he could beat him in a race. The hare laughed. They set out. The swift hare was soon out of sight. The tortoise came on slowly but steadily. The day was hot. The hare thought he would take a little nap. He lay down and soon fell fast asleep. Meanwhile, the tortoise jogged slowly on. When the hare awoke, he ran like a tiger. He reached the finishing point. He found that the tortoise was already there and smiling. The tortoise had won the race. Read the given poem. Now answer the following question. What should we pack? हमें क्या बांध कर रखना चाहिए? वी शुड पैक अवर ट्रबल्स इन ओल्ड किड बैग. हमें अपने पुराने खिलौनों के थैले में अपनी चिंताएं बांध कर रखना चाहिए. वाई शुड वी नॉट वरी? हमें चिंता क्यों नहीं करना चाहिए? वी शुड नॉट वरी बिकॉज इट इज़ नॉट वर्थ वाइल. क्वेश्चन नंबर 3. गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पोएम. Suitable title to the poem is Keep Smiling. Read the given passage carefully. Now answer the question given below. What organ of their body do the flies use to taste things? मक्खियाँ उनके शरीर का कौन सा भाग वस्तुओं को चखने में करती हैं? Flies use their feet to taste things. मक्खियाँ उनके पैरों का उपयोग वस्तुओं को चखने में करती हैं, वस्तुओं का स्वाद लेने में करती हैं. Where do the flies collect germs? मक्खियाँ कीटाणु कहाँ से एकत्रित करती हैं? Flies collect germs from rotten food and plants. मक्खियाँ सड़े हुए भोजन और पौधों से कीटाणु एकत्रित करती हैं. How do germs get into flies' stomach? मक्खियों के शरीर में, मक्खियों के पेट में जर्म कीटाणु कैसे पहुँचते हैं? The fly might such food that has germs in it. Thus the germs get into the fly's stomach. मक्खी शायद ऐसा भोजन करती है जिसमें कीटाणु होते हैं. इस प्रकार कीटाणु मक्खी के पेट में पहुंच जाते हैं. How do germs get into a man's body? मनुष्य के शरीर में कीटाणु कैसे पहुंचते हैं? If the fly pumps some of its stomach juice on our food, the germs get
on the food. If we eat it, the germs get into our body. मक्खी जिस भोजन पर बैठती है उस पर वह अपने शरीर में से, पेट में से कुछ रस छोड़ती है जिसमें कि कीटाणु होते हैं और वह कीटाणु भोजन में चले जाते हैं। यदि हम ऐसा भोजन करते हैं तो कीटाणु हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। Write a letter to your friend informing him or about your visit to your favorite park or picnic spot. Answer. Rampal Singh, 26/100 to Ashok Nagar, Kanpur. Dear Raj, I am fine here and hope the same at you and one. Also, as our exams are over, what are your plans for your vacations? I am planning to go for a picnic to the Kanha Kisli National Park on 14th of this month. If you wish, you may also join us. Rest is fine. Pay my regards to elders and love to youngers. Waiting for your love to younger. Waiting for your letter. Yours, Ramesh. Write a short note about an great leader. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was one of the greatest souls of India. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. After his schooling in India, for further studies, he was sent to England. He proved himself to be a freedom fighter and a brave soldier. He loved ahimsa. On 15th August 1947, India got freedom. He asked Indians to boycott foreign goods. He lived for countrymen and died for them. He was shot dead on 30th January 1948 by Nathuram Godse. He is an immortal soul of the world. Students, thank you very much. All of you understand the exercise. आई होप आप सबने अभ्यास को समझा और अब आपसे अनुरोध करती हूँ कि इन्हें अपनी फेयर कॉपी में लिखें और याद करें। थैंक यू वेरी मच।